Namaste, Jai Hind and welcome ladies and gentlemen. I'm Anand Narsimhan and on this very special edition we're going to have conversations to try and understand and get the right perspectives on various issues. Be it the issue of 72 Hure, be it the issue of the Chidambaram temple. But first up, the issue of Pasmandas and the common civil code. In this very special edition, we'll be joined by voices from the public spectrum who will give their perspective, and they represent perhaps a group that is oft not spoken about or not well represented on media, especially in debates and discussions. We've got scholars, we've got writers, we've got policy analysts, and of course we've got lawyers. We'll speak to all of them, but first, let's try and understand who are Pasmanda Muslims or the Deshaj Muslims. Why do they matter so much? And will they be a game changer for the 2024 elections? The Pasmanda is a Persian word that means the ones who are left behind. So the pichhda among Muslims. The term Pasmanda Muslims was first used in 1998 by Ali Anwar Ansari when he founded the Pasmanda Muslim Mahaz. The Pasmanda group has Dalit, backward, tribal groups in it like Julahe, the Ansari, Kasai, the Qureshis, Dhunia, the Mansuri, Fakir, the Alvis, Hajjam, the Salmani, and so on. Why do they matter? Pasmandas are estimated to make up to 80 to 85% of India's Muslims versus 15% Ashrafs. The number broadly tallies with the 1871 census that said only 19% of Muslims in India were upper caste, whereas 81% were made up of the lower castes. Around 103 Lok Sabha seats where Muslim voters influenced the poll outcome. And why it's been unfair representation? Because of the 7,500 elected representatives from the 1st to the 14th Lok Sabha, 400 were Muslims. But 340 of these 400 are from the Ashraf or the upper castes among Muslims. Only 60 Muslims over the 1st to the 14th Lok Sabha were from the Pasmanda background, who have been elected in 14 Lok Sabhas. While Ashrafs would have about 2.1% share in the country's population, their representation in Lok Sabha was around 4.5%. On the other hand, the Pasmanda's share in population was around 11.4% and they just had a mere 0.8% representation in parliament. Now, where are their spread? 103 Lok Sabha seats with Muslim population over 20%. Uttar Pradesh, 35 seats. West Bengal, 20 seats. Assam, 9 seats. Bihar, 9 seats. Kerala, 9 seats. Jammu and Kashmir, 6 seats. There you go. Bihar, Jammu and Kashmir, Kerala. That's Jammu and Kashmir. Maharashtra, 5 seats. Telangana, 2 seats. Karnataka, 2 seats. Haryana, 1. Madhya Pradesh 1, Jharkhand 1, Uttarakhand 1, Delhi 1, Lakshadweep 1. This is the entire breakup of where their distribution is. But there is a history to this, ladies and gentlemen. Let's go across to our guests. I have Ambar Zaidi, Fayaz Ahmed, Dr. Zeenat Shaukat Ali, and Amna Begum Ansari joining us. Namaste, Jai Hind, and Eid Mubarak to all of you. Jai Hind. Let me start. धन्यवाद. Let me start with Fayaz because आपने इस पर बहुत लिखा है और कहा भी है. ये देशज मुस्लिम्स, कुछ लोगों ने पहले भी मेरे से इसकी बात की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके बारे में लिखने वाले और कॉइनेज आपका है फयाज. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिस्ट्री क्या है? जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आपने जिक्र किया था हिस्ट्री में, आज से 100 साल पहले की बात है, करीब 100 साल पहले, तब भी पसमंदा मुस्लिम्स को वो आवाज़ नहीं दी गई उस कॉन्फ्रेंस में. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर और तब से लेकर अब तक वही हाल है. बिल्कुल सही कहा आपने. मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आप जानते हैं, आज़ादी से पहले एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी कि जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके और संयुक्त रूप से उसकी लड़ाई लड़ी जाए. उसमें जो प्रथम पसमांदा आंदोलन था जिसके जनक आसिम बिहारी थे, आसिम बिहारी और भैया जी रशीदुद्दीन जो जमातुल कुरैश के सदर थे, जो बूचर्स कम्युनिटी होती है, कसाई कम्युनिटी, इन दोनों को बुलाया तो गया था, लेकिन इनको बाज़ाब्ता उस तरह से नोटिफिकेशन करके नहीं बुलाया गया था जिस तरह से और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया था. आसिम बिहारी ने एतराज़ किया कि आपने पसमांदा संगठनों को क्यों नहीं बुलाया है. तो उन्होंने कहा कि असल में हमारी तरफ से कोई, उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं आया था.
तो आसिम बिहारी ने कहा कि ठीक है, जमात उलमा है, जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो मुस्लिम लीग है, उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन आया था वो हमें आप दिखा दीजिए। तो नवाब साहब थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने आए बाय करने लगे और बहुत आसिम बिहारी ने जोर दिया। तो उसके बाद उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको सब लोग ध्यान से सुने, दर्शक भी सुने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने एक कमेटी बना दी कि जिनको वो रजील और कमीन कहते थे, ये बहुत ही अपमानित जनक शब्द है, उसी रजील से अर्जाल बना है, यानी नीच लोग, और अजलाफ बना है, जल्फ असभ्य लोग। लेकिन इन रजीलों और कमीनों को इस मुस्लिम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल करना है कि एक कमेटी बना दी गई और उस कमेटी में आसिम बिहारी ने बहुत ही आग्रह किया कि इसमें कम से कम एक पसमानदा को रखिए, लेकिन उसमें सारे सैयद अशराफ लोगों को रखा गया और उस कमेटी ने फैसला दिया कि नहीं, इस तरह के कॉन्फ्रेंस में इन लोअर कास्ट को बुलाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो सतुआ प्याज बांध के आ धमकेंगे और जितने दिन कॉन्फ्रेंस चलेगा उसी दिन जमे रहेंगे और हमारे लोग बहुत नफीस होते हैं, संभ्रांत होते हैं, वो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। लिहाजा ये होगा कि ये जो रजील कमीन लोग आएंगे ये अपनी बात मनवा लेंगे। तो ये खुलेआम भेदभाव था उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया गया था। एक आखिरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त बहुत हाईलाइटेड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी देशज मुसलमानों का या देशज पसमानदा की कोई भागीदारी नहीं, जिनकी संख्या 90% है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 150 से 200 मेंबर है और सारे उसमें से एक सैयद जो विदेशी मुसलमान वो बैठे हुए और सारे मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का दावा करते, जबकि उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है। तो आज़ादी से पहले से लेके देश बंटवारे के बाद से इन्होंने, अशराफ लोगों ने अपना एक पाकिस्तान भी ले लिया, उसके बाद भारत में भी ये वही अपना पाकिस्तान चला रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, जो भी अल्पसंख्यक मुसलमानों नाम से संस्थाएं हैं, उनको मैं खुलेआम कहता हूँ कि ये छोटे छोटे पाकिस्तान है, उसमें भी हमारी कोई भागीदारी नहीं। तो स्थिति बिल्कुल आपने सही कहा कि स्थिति हमारी आज भी बिल्कुल वैसी ही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। But how is it that this was never highlighted, Amna Begum Ansari? This has never been talked about. Muslims have always been electorally also been seen as one bloc. The narrative or the minorities discourse also looks at Muslims as one bloc. Elitism, हम सब जानते हैं, elitism, casteism हर जगह होता है, हर community में होता है. But it's never spoken about. ये इतना rampant है और इतना disparate है कि representation ही नहीं है. All India Muslim Personal Law Board कहा जाता है, and now Fayaz is saying कि उसमें all members are all Ashrafs or Sayyadis. There is no Pasmanda representation at all. 90% of the Muslim population of our country is not represented at all. Yeah, I totally agree with Fayaz ji, and this is it's not like this has changed now. If you talk about recent, am I audible? Yes, you are. Please go ahead. Yeah, if you talk about the recent a few incident like Babri Masjid, Babri Masjid committee. So we will see there also the same thing happen when a committee was formed. The majority of people are from the Ashraf community. When the case was getting fought into the court, so that was the Pasmanda. Sorry, there is so much disruption I can hear from. We'll try and sort that out. You're getting a feedback, so we'll sort that out. We'll sort it out. Please go ahead. Try and manage it for 30 seconds. We'll sort it out. Okay. So when the case was in the court, so the person who was fighting that case was from the Pasmanda community. But when government allotted the fund and the land, so entire committee was the form by the Ashraf community. And when even the Pasmanda Muslim went ahead and asked, at least take the one person who fought the case in the court, can you bring that person in the committee? And they refused it outright. So it's not like the situation has changed or something has changed drastically. We are still facing the same discrimination. Why this has been happening? Because whenever any space is there in a political landscape or in a social justice landscape anywhere, in the name of the Muslim, only Ashraf voices we have been hearing. And for somehow elite Hindu or even political parties of majority, they would always consider the Ashraf as the representative of the Muslim. And why this has been happening, I cannot give a proper answer for that. I think there should be a proper study. But how the other reason I believe is that majority of the Pasmanda Muslim were not well educated. This is our second generation where we
were able to access education after the freedom of India. So when the second generation are getting education, they are being able to speak for themselves. So we are coming ahead and speaking for ourselves. Zeenat-ji, agree, disagree? Has it been that some have always driven the narrative while others have been forced to follow? And broad-brushed, painted in the same hue? Yes, Anand, I can't say that I'm an expert on the subject. Ji. But I think, the entire ethos of what we look at in Indian politics altogether is that it is always the powerful and the upper classes who have been able to dominate, whether they are among the Muslims or among the non-Muslims. And so therefore this also was an oppressed community. And therefore, you see, they had to get together. Although I must tell you that in Islam, it is never the wealth of a person. It is not the black over the white, or the white over the black, or the rich over the poor, but there's equality. But that sense of equality that that Islam spoke about does not exist. It is an ideal that one says, and it is obvious that when the lower class, the poorer classes, the more oppressed classes, Pasmanda represent, unfortunately falls into that category where the more powerful and the richer classes dominate. And if I may, I don't know whether this point fits in or not, but even in our entire system of governance, we find that there is a certain class even among the non-Muslims that rules, and like the Brahmins, for instance. Correct. And the rest are at the downtrodden class. I think this also became a parallel for this community. This is the reality. Society corrupts. When certain philosophies propound, they all propound equality. Like in the Bhagavad Gita, Krishna says that varnas are supposed to be classes are supposed to be based on guna and karma. That is ability and action. Otherwise, everybody is born equal. Everybody is born as a jantu, and then it is your sanskar. It is a sanskar that makes you what you are. That means how you are brought up in society. But Ambar Zaidi, this controlling the narrative, beautifully done. Blame all casteism only on Hindus, whereas there is casteism, elitism across the board. And even among the OBCs there is casteism. Even among the Dalits there is casteism. Even so that is also existing. Yes, Ambar Zaidi. Absolutely, Anand. The casteism among the Muslim community has been very prevalent, and nobody has ever addressed the issue of Muslim community as discrimination. As Fayazi and Amina has very well spoken about the issues among the Pasmanda society of Muslim community. And thankfully now at least it is being addressed and identified, and now people are actually knowing about the issues among Muslim Pasmanda society. And I totally blame this, and if I would blame, that would be completely our political party, because mere politics, they have just used Muslim community as vote bank. They have never addressed and identified their issues, and they never thought of about their upliftment or education and so on. So now the issue of Muslim community, be it Pasmanda society, the issue of Muslim women and other discriminatory or primitive laws among Muslim society is being addressed. And we all are very happy, and this is a very auspicious day, and let's on this auspicious day sacrifice our egos and our prejudices within ourselves that we have for each other, and sacrifice those thoughts and just bring to equality and respect for each other and love for everyone. Fayaz, आप कुछ कह रहे थे, and then we'll get to the UCC aspect. मैं इस्लाम के बारे में कह रहा था, एक बहुत ही भ्रम फैलाया जाता है कि इस्लाम में ऊंच नीच जात पात नस्लवाद नहीं है। ये भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। इस वक्त जो इस्लाम है, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त जो इस्लाम है उसमें लिखित रूप से नस्लवाद जातिवाद है, व्यवहारिक रूप से है, और इस बात का पूरा प्रयास किया गया है कि नस्लवाद जातिवाद इस्लामिक आस्था का महत्वपूर्ण अंग बना रहे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है मजमूए कवानीन इस्लामी, उसमें इन लोगों ने पर्सनल लॉ से डील करती हुई किताब, उसमें उन्होंने लिख रखा है कि किस जाति और किस नस्ल आपस में बराबर है, कौन किसकी शादी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि इस्लाम में नस्लवाद जातिवाद नहीं है।
दूसरा, अगर आपको हमारी बात को चेक करना है तो आप एक इस्तीफ्ता लिखिए। इस्तीफ्ता कहते हैं फतवा मांगने के लिए जो एप्लीकेशन लिखा जाता है, वो आप लिखिए सारे बड़े सेमिनरी, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी, जितने सेक्ट्स हैं इस्लाम के, सब में आप मदरसे में एक इस्तीफ्ता लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए कि क्या एक सैयद लड़की की शादी एक मिरासी लड़के से हो सकती है। ये आपको लिख के दे देंगे कि दोनों में नस्ल का अंतर है, जात का अंतर है, ऊंच नीच का अंतर, इसलिए शादी नहीं हो सकती है। तो ये किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इस्लाम में पूरी तरह से लिखित रूप से, व्यवहारिक रूप से, और इसका पूरा प्रयास है कि इस्लाम में नस्लवाद, जातिवाद बनी रहे। एक आखिरी बात कि जब भी मुसलमानों की बात होती है तो इस्लाम पे क्यों बहस होता है? देश संविधान से चलता है तो संविधान पे बहस होना चाहिए कि संविधान में क्या राइट्स है, क्या नहीं है, सोशल जस्टिस है कि नहीं। इस्लाम को हम हर जगह लेके आते। अगर इस्लाम जस्टिफाई करेगा तो क्या तभी हम उस पर मानेंगे? अगर इस्लाम में कोई चीज नहीं है तो क्या उसको हम नहीं मानेंगे? तो बहस संविधान पे होनी चाहिए, इस्लाम पे नहीं होनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता था। And on that, I thank you all for airing your views, providing perspectives. We'll allow the audience to get there and form their own opinions. I thank you all.